Good afternoon to all. On behalf of the Department of Commerce and Management, Bhakta Kavi Narsinh Mehta University, Junagadh, and you all are heartily welcome to this university. And from now onwards, will be a part of this family. And you all have to raise the name of this university like others do. The Department of Commerce and Management has organized Adept Talk series. Today, I warmly welcome today's eminent expert, Dr. Ruchi Tiwari. Today, I warmly welcome our Honorable Vice-Chancellor. He is not present. I also welcome of EC members, principals, professor, research scholar, and my faculty members. I also welcome who are watching through the YouTube. I also warmly welcome today's series Adept Talk eminent expert Dr. Ruchi Tiwari. Adept Talk is designed to improve the knowledge in the field of commerce and management 21st century. Is the century of the knowledge, and the aim of the department is to give quality education to our valuable assets, to our students. Kindly join with us. It's a journey of knowledge. Let's share the knowledge and about Built New India. About the Dr. Ruchi Tiwari. Dr. Ruchi Tiwari is working as an associate professor at Parul Institute of Law, Parul University, Baroda. She has done her PhD, LLM, LLB, BCom from the MS University, Baroda. She has also done Diploma in Cyber Law, MHRM, Diploma in Interior Designing. She has written 2 books on the farmer rights and seed law. She has written various articles, research papers, chapter in edited books, conference, proceeding at the national and international level. She is a PhD guide and PhD coordinator also. Her areas of the specialization is the specialized IPR, rights of the farmer, human rights, business law, and laws relating to commerce and management. She deals with the delivering expert lectures and talks on the various platforms. Being a dedicated educationalist, she goes beyond the chalk and duster to encourage the students to learn the details of the law. She is actively engaged in the outreach activities to spread legal awareness among the burdened masses of the society. Honorable Vice-Chancellor Professor Dr. Chetan Trivedi sir has inspired us to start this series under his efficient guidance. I feel happy to inform you that BKNMU University may be the first university who started this series of the commerce, management, finance, banking, marketing, accounting, and general management topics. Today's topics: commercialization of the IPR, apropos of the geographical indication. Now I welcome today's eminent expert, Dr. Ruchi Tiwari, deliver his expert speech, topic of commercialization of IPR, apropos of the geographical indication. I again welcome and now request to the deliver speech of the Dr. Ruchi Tiwari. Please. Thank you. Thank you so much, sir. It's my privilege to be invited in such a good university, which is near to nature. I sincerely thank to VC sir for inviting me and encouraging students for starting such a good Adapt Talk, where you can talk about not only the commerce and management, but other different areas also. Thank you so much for calling HOD sir, Bhavsinh Dodia sir. Thank you, Anitaba ma'am, and other teachers who have invited me. Today, I'll be starting with a topic. So it basically discusses about the commercialization of intellectual property rights. So I'll just take a minute to start a PPT. Yes, is presentation visible? Yeah, thank you so much. So before starting with the topic, let's have a little bit discussion on topic itself, like title itself. When I discuss about the title, it says commercialization of intellectual property rights. So now the word commercialization means the commerce is included into it. So kahin na kahin, if we see that when the word commerce comes, the students from commerce get excited. There's something for us because I'm coming from the law background, so people think there's no commerce included in the law, but I think that law can be included everywhere, whether we are living. When we live in a developed society, it includes law itself. So commercialization of intellectual property rights and a reference, which are special reference to our geographical indications. So moving to the next slide, which talks about, if you can just visualize a picture in the next slide.
Yes. If you can just visualize the picture that talks about a human brain. Okay. So when we see this human brain, it has many things involved into it. There are many ideas which can be seen. Like, for example, from designing of a plane to designing of new gadgets, circuits, or something, designing of a bottle, or creating a new inventions, maybe whether it's a plant invention or genetic modification of anything. Everything and anything starts with the brain. So anywhere when we see, it starts with brain. So can we say a brain or my idea is my property? Because we know the forms of property, they are intangible and intangible forms. Okay, so when we talk about property, they are basically intangible and intangible forms which can be touched, which cannot be touched. For touching properties, we have other acts, but the things which are in our mind, if I have certain ideas, मैंने कुछ सोचा, मैंने एक कविता लिखी, या मैंने एक किताब लिखी, or I have created a new invention, I have created a new gadget, so where I can secure my rights. So IPR, it talks about intellectual property rights of those people who have thought something, they had some creative idea, so where they can get it registered. वो कहाँ जाए और वो रजिस्टर करवाए. फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन ऑफ अस हैज यूज्ड पेंसिल्स. कभी सोचा था किसने ये पेंसिल बनाई? डू वी नो द नेम? और वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, और वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब्स. ओके, सो कहीं ना कहीं वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. The one who first creates it gets an exclusive rights to enjoy it. But कब? जब वो चीज रजिस्टर करवाएगा. आपके राइट्स आपके तभी हैं जब आप रजिस्टर करवाएंगे. So brain only thinks and designs an idea, but legally that can be registered somewhere. So moving to the next slide, where it talks about something, then we talk about something which are types of IPs. Okay, so types of IP. Before I going to the types of IP, I'll give you an example. Like, for example, articles or literary works or artistic works or something which is symbols, or some of the like McDonald's symbol. When I see M from the very far, I can understand it's something which is McDonald's. But can this M be copied by so many people? Yes, if you have not registered it, it can be copied by many people. So there are different types of IP. So first we'll talk about something which is basics, patent. Now what is patent? Patent is a kind of invention. I'll give you examples. For example, Levi's jeans, we all know. Now this was a patented jeans. Do we know the history how the jeans actually came? Jeans were the combination of cotton and a particular material which was used and designed in such a way कि laborers बहुत दिन तक वो jeans पहन सकें, ठंडी में काम कर सकें, और उस चीज को patent मिला था. Like for example, it was first that the jeans got its patented, and they were the tailor. Now the Levi's jeans 501, if you can just see the logo of a Levi's jeans, it has written 501. That's their most famous jeans. They enjoyed 20 years rights on that particular cloth of jeans. और उसके बाद वो public domain में चला जाता है. Now what do you mean by public domain? Anyone can make those jeans. So first one is patent. Patent can be got on inventions. Patent can be get on some like creation which is new, maybe a bicycle, a tire tube, Dunlop tires, or you come up with a aircraft engine. These all things can be patented. Then the second comes as trademark. Now trademark is simply a mark. Like for example, if I create a tick, आपको पता है, I'm talking about something which is Nike. If I have drawn an M, you'll come to know I'm talking about McDonald's. So why? Or Google Google, if I'm writing somewhere, so we can say that this Google trademark is being registered. So that is registered trademark. Now this is something which is again very important for the commerce student, because end of the day commerce students are going to do something which is related to their jobs or businesses where they are going to deal in and out with trademark. So एक trademark आपके लिए बहुत important है. और आज जब हम geographical indications की बात करेंगे, how these two are different, वो भी हमें समझना है, क्योंकि sound तो दोनों same ही करते हैं, तो different कहाँ हो रहे हैं, that is also important. Then the third one is copyright. Now we teachers and the authors and the persons from film industry or lyrics writers, for us copyright is very important, है ना. अगर मैंने किताब लिखी है, अगर आप मुझे
उस चीज मैंने कॉपीराइट करवाया है वो किताब पे, या मैंने टीचिंग स्किल्स डेवलप किए हैं जो मेरे एक्सक्लूसिव स्किल्स हैं, सो आई कैन होल्ड अ कॉपीराइट ऑन टू दैट. दैट इज आई हैव अ licensed version. This is created by me and you can very well use it. I can sell you, you can use that, but with my permission only. So something which is a copyright where you can enjoy those rights with the permission of that person. आपने बहुत सारी मूवीज के रीमेक देखे हैं, शायद आपने डॉन 1 देखी है एंड डॉन 2 देखी है. ओके, नाउ ओल्ड डॉन हैड अमिताभ बच्चन एंड न्यू डॉन हैड आई गेस शाहरुख खान. सो नाउ व्हेन दैट मूवी केम, आपको अगर ध्यान हो तो उन्होंने परमिशन ली थी because one of the makers was the son of the old movie maker, but दूसरे से permission ली गई थी because they holded a copyright into that. Okay, if I want to play the song, I need to get a license, I need to give them the royalty, I need to have a permission. हम तो we use the pirated versions of everything, but they are not permissible actually. Moving to the next different kinds of copyrights, or we can say different kinds of not copyrights but IPs. If you can move to the next slide, the next is integrated circuits. Now, what is this integrated circuits? Phone chips, okay, laptop chips, the chips which are being made, the circuits which are being made, वो भी अलग से IP हैं, उनको भी protection मिलता है. Then you have the third thing, which is we can say fourth thing, sorry, but that is trademarks. यहाँ पे मैंने कोको कोला लिखा है. आपने कभी 3 चीजें देखी है? कोको-कोला, थम्स अप, and the third one is this Pepsi. All the 3 are black colas. Why all the 3 taste very different? And there are other brands also like Socio and the other brands. ये सारों का taste अलग है. That's their trade secret. That is something which is not to be revealed. There's a saying about this Coca-Cola trade secret that there are in the world only 3 people know the trade secrets of Coca-Cola. क्या ingredients है जो hidden ingredients है जो उनका trade secret है, वो सिर्फ 3 लोग दुनिया में जानते हैं और वो तीनों कभी एक साथ ट्रैवल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो ट्रेड सीक्रेट लॉस्ट हो गया तो किसी को नहीं पता. हो एक और बात बताते हो, हमारे सिटी में there's one local पानी पूरी वाला. Okay, now he also has a trade secret because once I was eating his pani puri, he said me one thing कि इसमें क्या पड़ा है ना ये सिर्फ मैं जानता हूँ, मैं दरवाजा बंद करके इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मिलाता हूँ. Now that's a trade secret. That means whatever less or more he is utilizing, that's his secret and he cannot reveal that because otherwise the people will start copying it. Then the next is design. अगर आप फोटोग्राफ देखें तो बहुत सारी काइंड्स ऑफ बॉटल्स दिख रही हैं आपको. ये बॉटल्स क्या है? अलग अलग शेप्स और साइज के डिजाइन है. आपने बुर्ज खलीफा देखा है दुबई का, या मतलब और इफ यू सी दैट फ्रेम बिल्डिंग व्हिच इज देयर, नाउ दैट्स डिजाइंस. For example, if I give you the example from the mobile phone, that's the best example for everything coming into it. The language which is used, copyright hota hai. The design which is there comes under design act. The circuit which is used comes under circuits. Or the trade secret, the secret of this phone, they never reveal. Patent, the technology gets the patent for the same. Okay, so kahin na kahin mobile phone is the best example to explain the IP laws. Then you have the plant varieties. When sir was saying about me, I have done my PhD in this plant varieties. There are different types of plant varieties and they can be registered, and we are fortunate enough कि India में वर्ल्ड अपनी varieties register कर सकता है. अब मैं आती हूँ हमारे main topic पर, और I have still very much time left, so this is my main topic, which is geographical indications. Now, what do you mean by geographical indications? So यहाँ पे the word itself says something which is geographically indicated. आपने साड़ियाँ सुनी है, आपने बनारसी सिल्क सुना है, आपने गढ़वाली सिल्क सुना है, पाटन सिल्क सुना है, पाटन का पटोला सुना है, राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट सिल्क सुना है. सिल्क तो सब जगह है पर सबका अलग अलग सिल्क है. सो ये हम उनको किस नाम से जानते हैं? फ्रॉम द प्लेसेस विच दे कम. केरला सिल्क, कर्नाटक सिल्क. सो ये क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. ओके, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो तिरुपति लड्डू. आप सबने शायद तिरुपति लड्डू का प्रसाद खाया होगा कभी ना कभी या देखा होगा. ऐसा इसमें क्या है कि इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देना पड़ा. द प्रॉब्लम वाज दैट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाज नॉट गिवन टू अ लड्डू. आई जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स ओवर हियर. तो क्या हुआ, आसपास वाले लोगों ने भी सेम टाइप ऑफ लड्डू बनाना शुरू कर दिया और उसको तिरुपति लड्डू के नाम से बेचा जा रहा था. So then, as we had an act on geographical indication, they started having something which was कि
to get a registered variety. इस पे एक registration देना चाहिए कि दूसरे लोग इसका गलत benefit ना ले सके. Okay, so it started with the practice of offering laddus in this Venkateshwara temple of Tirumala was since 1516. मतलब वो 16वीं शताब्दी से चल रहा है. Since 16th century we are seeing that there is a pratha of giving a Tirupati laddu और श्रीवरी लड्डू इसको कहा जाता है. So in 2009 when the act came, they decided कि अब तो हमें इस पे प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब इतनी पुरानी चीज है, ओके, और अगर उसको मैनिपुलेट किया जाएगा तो कुछ सालों बाद आपको ये पता चलेगा कि तिरुपति लड्डू इंडिया का तो था ही नहीं, वो तो श्रीलंका में बन रहा था और श्रीलंका ने उस पर जोग्राफिकल इंडिकेशन ले लिया. सो इट इज बेटर दैट वी टेक प्रोटेक्शन, अदरवाइज समवन एल्स इज गोइंग टू टेक. सो दिस इज वन एग्जांपल. देन द सेकंड इज बनारसी सिल्क फॉर एग्जांपल. सो नाउ we know all type of Banaras. How Banarasi silk started, do you know? The brocade and the saris. When, in which year it all started? It is also that the Weaver Association of Banaras ने इस पे टैग लिया. ये इंडिया के बाहर से ट्रैवल होते होते इंडिया में वेस्ट कोस्ट से एंटर होते हुए they have reached to the Banaras, and then the weavers settled down in Banaras and tried to create a Banarasi silk. So just you can imagine the travelers have moved so much. If they wouldn't have taken geographical indication in that era, then ये कोई और उस पे benefit लेगा. Okay, so moving to the next slide from which we can have a probable discussion. What is geographical indication? So basically, if you can just visualize the photograph, it says from where the product has been coming. यानी हमने पिन कर दिया उस चीज को कि कहाँ से आया है. रतलामी सेफ तो रतलाम है ना, नागपुरी संतरा तो नागपुर है. So that means geographical indications are generally the traditional products produced by rural, marginal or indigenous communities, okay, over the generations. So यहाँ पे तीन चीजें बहुत important. It is something which is a rural product. Traditionally people are included into it. Okay, so यहाँ पे traditional लोग involved हैं. So we need to protect their rights also. And over the generations they are working into same. आपने कभी सोचा है, आप पाटन गए होंगे, आपने रानी की वाव देखी होगी, आपने पाटन में पटोला वीवर्स देखे होंगे, but how many people are still doing that? क्योंकि we want to educate ourselves and leave the profession in which we expertise. हम बोलते हैं कि आज मेक इन इंडिया करो, be vocal, है ना, be local. But what about that local things which we had in our traditions? We are leaving those things and running for something which is westernized. I'll just share an example. हम सबने पत्तल की थाली में खाना खाया है. पहले छोटे थे तो शादियों में पत्तल थाली यूज होती थी. Do you even know कि we have not protected that? That's why the other countries claiming that कि ये हमारा invention है. अब यहाँ हम केले की लीफ में खाना खाते हैं, ठीक है. So this is what? This is our basically traditional knowledge which should be preserved with the hands of geographical indications, like for example. So when we talk about this, geographical indication is a sign, that is a GI tag, है ना. वो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा दिखता है. वो GI tag लगा होता है उस चीज के ऊपर, which gives me security कि ये ओरिजिनल है और मैं इस पे विश्वास करके ले सकती हूँ, और अगर कुछ गड़बड़ निकले, I can claim these people, I can claim with these people. So what is geographical indication? It is a kind of an indication. It originates from the geographical territory. अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि पाटन नो पटोलो, that means कि it has come from Patan itself, or that places nearby Patan which come under the Patan initially. Or if I say Junagadh की केसर कैरी, मतलब the कैरी which you people have, you know, you hold a geographical indication into that. So that's Girnu Kesar, that's Gir's Kesar is being getting a geographical indication in that totally tastes different from when we eat Alfonso mango from the Maharashtra. Okay, then you have it can also be the goods like agricultural, natural or manufactured goods. तो तीन चीजें आ गई. Agriculture यानी mango example है, natural something again which a mango can be an example, or handicraft work like manufactured goods can be an handicraft thing. Then you have it should have a special quality जो चेक होगी, हिस्ट्री जो चेक होगी कि बेसिकली जैसे रसगुल्ले की लड़ाई हो गई थी, दो स्टेट सामने आ गए थे, एक बोलता है रसगुल्ला हमारे यहाँ से पहले आया था, दूसरा बोलता है हमारे यहाँ से पहले आया था. सो देन इट विल बी चेक्ड कि किसने पहले रसगुल्ले की इजाद की थी, ठीक है, हु केम विद द रसगुल्लास फर्स्ट, व्हिच डायनेस्टी केम विद. Okay, so on this basis it is a geographical indication which is being granted. So can I move to next slide please? Yes, so here when we see
Now it comes to the GI tags. I told you कि GI tags दिए जाते हैं. ये आप जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें जोग्राफिकल इंडिकेटेड है, जैसे कि कोल्हापुरी चप्पल या फिर मरी जिसको आप काली मिर्च बोलते हैं, या चावल या फिर इलायची, ये सब जगह की अलग अलग आइडेंटिफाइड प्लेसेस की हैं जहाँ पे जोग्राफिकल इंडिकेशंस इनको मिला हुआ है, एंड दे आर एंजॉयिंग दोज जोग्राफिकल इंडिकेशंस. So WTO, as India is a member of WTO, that is World Trade Organization, indicated us to be party to this, and we being party to that, we have come with a geographical indication of the goods, and it came into force in India. The act came into force in India in 15 September 2003. Okay, can we move to the next slide, please? See, now this is the best explanation to understand geographical indications किन ने लिया और कैसे कैसे लिया. This is just the picture which I have downloaded from internet, so it's not my creation. I don't hold a copyright on this, so I'm very well giving a source of information from where I have taken. So always when we use something in our PPTs, try to include the referentials, because you are not copying, you are using it for someone's teaching purpose, for example. So if you can just see, Gujarat holds around 16 GIs, 18 Rajasthan holds, and so on, so called all the countries, you can all the states, sorry, you can see that they hold this kind of GIs. इसमें से कुछ GI ऐसे हैं, like a wine which holds a GI in India, which is manufactured in India. Then you have the cambe, वो पत्थर बोलते हैं एक जो आता है, which is given a geographical indication in Gujarat itself. That also holds a geographical indication from Gujarat. You have a mirror from Kerala, which holds a geographical indication, which is a metal mirror. है ना, हमने कांच का तो mirror सबने देखा होगा, metal mirror होता है हमारे यहाँ. मतलब that's also a traditional thing. Yes, can we move to the next slide, please? So now this is the best example, blue pottery of Jaipur. Okay, so ये आपने देखी होगी blue pottery. Now from where this blue pottery has come? It was the Mongol artisans who actually came to India, and from there, this is a Turkish, basically it has its history from the 14th century, where the Turkish people actually came. वो ये कलाकारी लेके आए थे जिसमें उन्होंने न्यू टेक्निक्स डेवलप की, और जयपुर में इसको बेसिकली इट वाज एनहांस्ड इन जयपुर. सो दिस इज समथिंग ब्लू पॉटरी. इफ यू सी इट्स हिस्ट्री, हम कहाँ से लाए हैं इसको? हम इसको दूसरी स्टेट से लाए हैं, दूसरी कंट्री से बकायदा आई है, ट्रैवल करती हुई इंडिया में आई है, और इंडिया में आके इफ यू सी it was Savai Ram Singh in 1835 to 1880. He brought this thing. The Jaipur king has sent local artisans to learn this work and get trained themselves. And then the blue pottery was used all over his kingdom. And it was reintroduced by the efforts of mural people, muralists and painters like Kirpal Singh, Shekhawat and other peoples who tried to develop this. And Rajmata Gayatri Devi ji ने भी इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की, और इसको हमने वहाँ से लेके जोग्राफिकल इंडिकेशंस तक लेके आए. पर एक चीज नोटिस की मेरे कहने में, मैं कम्युनिटी की बात कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल पीपल हु इज claiming the geographical indication. It's not Ruchi Tiwari who's claiming the geographical indications on blue pottery. It is the whole people of Baroda will be claiming to a particular thing. Okay, then moving to the next examples, like for example, if you can see the mangoes which are available. See, we are heading towards summer. अब mangoes आने ही वाले हैं, and when you have 4 different types of mangoes and all hold a geographical indications, इसी से आइडिया लग सकता है कि इंडिया में हम लोग कितना मैंगोज पसंद करते हैं कि हमने 4 अलग अलग प्रकार के मैंगोज को जोग्राफिकल इंडिकेशंस दे दिया. फर्स्ट मैंगो जिसको जोग्राफिकल इंडिकेशंस में रजिस्ट्रेशन मिला था, हम बोल सकते हैं वो कहीं ना कहीं था एल्फांजो या गिर केसर. दोनों एक साथ ही आगे पीछे आए थे. दशहरी आम को जीआई टैग मिला है. सो आई गिव यू द बेसिक्स एग्जांपल्स ऑफ दिस. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट महाराष्ट्र मैंगो, एल्फांजो, ये जापान तक भेजा जाता है ऑन द नेम ऑफ एल्फांजो और हाफूस आम. ओके, इसको अपना जीआई टैग 2018 में मिला था. पोर्टुगीज ने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था बाय अ जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन बीइंग डन इनटू इट, एंड इसको उस प्लेन्स पे प्लांट किया गया था बहुत लंबे पैमाने पे, मतलब बहुत सारा एरिया कवर करके एक्सक्लूसिव वैरायटी ऑफ एल्फांजोस किया गया था जो कि कोंकण में पड़ता है. अब इसको जोग्राफिकल इंडिकेशंस दिए गए. इवन कुछ पार्ट ऑफ गुजरात में भी जोग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए ये एल्फांजो मैंगो है जो उगाया जाता है, जिसका जीआई टैग बना रहेगा वही रत्नागिरी हाफूस के नाम से ही जाना जाएगा और एल्फांजो के नाम से ही ये जाना जाएगा. एंड इट इज ऑल्सो इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया भी कहीं कहीं ये उगता है, पर मेजरली हम इसको महाराष्ट्र से मानते हैं. देन ऑफ द सेकंड विच इज गिर का केसर. अब हम आपके एरिया में हेड करते हैं गिर का केसर.
1931 में फर्स्ट सैपलिंग लाया गया था गिर में, जो कि वनस्थली में, आपके यहाँ जगह है राइट, वनस्थली में जूनागढ़ में इसको प्लांट किया गया था और 2011 में इसको जीआई टैग मिला है। अब जब ये लाया गया था तो राजा का मोटिव ये था कि पूरे इलाके में इन्होंने ये मैंगो प्लांट्स लगा दिए गए थे एंड देन ओवर द टाइम इट इज बीइंग डेवलप एंड इससे भी आगे यहाँ पे ये जीआई टैग लेने वाले कौन थे आप जानते हैं? जीआई लेने वाले वो फार्मर्स नहीं थे जो ये उगा रहे हैं, उनके लिए एग्रीकल्चर कॉलेज ने वर्क किया था और एग्रीकल्चर कॉलेज फॉर जूनागढ़ ही आगे आया था इनको जीआई टैग दिलवाने के लिए। सो इट इज I can get GI tag for myself and even I can try and get a GI tag for other also. तो मतलब क्या होता है, मैं अपने लिए भी GI tag, हमारी कम्युनिटी के लिए भी ट्राई कर सकती हूँ और मैं एज अ रिसर्चर किसी और के लिए भी ये GI tag ट्राई कर सकती हूँ। देन वाज द दशहरी आम फ्रॉम यूपी, है ना, जिसको एक GI tag मिला। दशहरी आम बहुत छोटे छोटे से होते हैं और यूपी मतलब नॉर्दर्न इंडिया में बहुत फेमस है। दशहरी आम की खासियत ये है कि वो बहुत छोटे होते हैं साइज में और वो कहाँ आंध्रा, नेपाल, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, ये सारी जगह पे दशहरी आम पाए जाते हैं जिसको अगेन जीआई टैग मिला हुआ है। अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गिर का केसर एंड दशहरी आम? Dasheri आम is a small size and a different taste. Kesar आम is having a orange color मतलब orange color on its top. So from this also it can be differentiated. वरना GI देने के पहले वो टेस्ट किया जाएगा कि ये दोनों सेम है या नहीं। So then जर्दालू, ये लास्ट है जिसको बहुत रिसेंटली जर्दालू आम को बिहार में है जिसको जीआई टैग मिला है। It was again first time planted by Bhagalpur region by महाराजा रहमत अली, जिन्होंने पहली बार इसको प्लांट करवाने की कोशिश की थी। एंड इट इज ऑल्सो, सी माइंड वेल, इफ यू गेट ऑल द 4 मैंगोज टू ईट, यू विल फाइंड व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ एंड हाउ दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर टेस्ट। ओके, मूविंग फर्दर, why we prefer the GI tags? Okay, can we move to the next slide please? Why we prefer these GI tags? हमें GI tags की जरूरत क्या है एक्चुअली, क्या लगता है आपको? अभी तक तो समझ में आ गया होगा। GI tags बेसिकली प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स उनको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको एक्स्ट्रा माइलेज दिलवाते हैं। They get a premium quality products to be sold not only in India but can be exported. जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए, ज़्यादातर मैंगोज एक्सपोर्ट होते हैं from Europe to other Asian countries to America to other developed continents. So we don't only keep them to us but we are exporting them to the other countries also, which is giving us what we are getting economic mileage because of that. Legal protection मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट कि जो हमारे पास जिस चीज का लाइसेंस है वो कोई और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता मुझे बिना पूछे बगैर, या मेरी पूरी एसोसिएशन को बिना पूछे। ओके, देन यू हैव इट प्रिवेंट्स द अनऑथराइज्ड यूज, कोई अनऑथराइज्ड इसको यूज नहीं कर सकेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इकोनॉमिक और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट है, इट गिव्स द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ठीक है, आपको इकोनॉमिक एक बैलेंस मिलता है। इफ यू कैन जस्ट सी द पेंटिंग in the slide, that's a Madhubani painting. So now what's Madhubani painting? Madhubani painting has also got its GI. ठीक है, अब Madhubani painting is originated from the Mithila region in Bihar. It started from there. वहाँ पे पहली बार ये हमने देखा था कि it started from there and it gets its reference from there. Madhubani painting is crafted and it's done for the wedding reasons and usually it has a theme where you will find females, you will find animals. So आप कहीं ना कहीं इनकी traditional value भी समझिए. They are trying to protect women as we are heading towards in the march with a women's day in 8th March. So you can understand it was in the history also where the women were tried to being protected, the animals were tried to being protected by the painting which is used. So if you can see, it's the women's which can be identified. Animals, fishes होती थी, बहुत ज़्यादा fish की painting होती है उनमें. So that actually was helping us to understand the importance of the females. And now this also gets usually in daughters' wedding ये painting करवाई जाती है वहाँ पे. And the women of the village practice these paintings on the walls. Like जैसे हमने भी देखा है गुजरात में एक traditional painting करवाई जाती है शादी के टाइम पे दीवारों पे, है ना? क्या उस पे GI टैग है? Okay, क्या हम उस पे GI टैग ले सकते हैं? फिर there are other kinds of paintings also which can be used for this purpose. So
दिस इज समथिंग हाउ देयर. अच्छा, ये एक ड्रीम होता था. एक पेंटिंग किस तरीके से करते थे कि हमारी डॉटर जिसकी शादी हो रही है उसको आगे क्या लाइफ में मिलना चाहिए, हाउ हैप्पी फैमिली शी विल बी गेटिंग. सो दैट वाज बीइंग painted on the walls of the houses where they used to have the hopes and dreams which can be reflected for their daughters. Okay, so can we move further? Okay, so what about the facts? So that now the point comes that what are the facts which are included into it? What is international level? Like, for example, if you see over here, it says, as I have already explained, trips, the most important portion of something which is trade related aspects of IPR, जहाँ से IPR का actual existence सामने आया. Okay, पहले कभी ये नहीं हुआ है. एक चीज और है, इंडियन ट्रेडिशन कभी ये नहीं कहता कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है. But when you want to stand globally, you need to register yourself legally. ठीक है. So that's why कहीं ना कहीं we being a party to TRIPS, we being a party to WTO, we need to have this regulations or we need to bring the laws. So अगर आप इस फोटोग्राफ में थोड़ा सा देख पाए तो उसमें लिखा है geographical indication tag. Okay, so this is the GI tag which is being enclosed with the things which have geographical indication. आप अब आम का डब्बा खरीदे ना तो उसमें देखिए क्या GI टैग मारा हुआ है, तो आपने सही आपके वहाँ का आम खरीदा है या फिर आपने लोकल ग्रोन मैंगो खरीदा है GI टैग के बगैर. ओके, सो देयर वुड बी अ प्राइस डिफरेंस बिटवीन द बोथ. ठीक है, एक का प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि वो GI टैग है, वो ओरिजिनल है, आप क्लेम कर सकते हो, आप केस कर सकते हो, और दूसरा एक लोकल मार्केट से. ठीक है, सो मूविंग फर्दर, why GI tags are important? What is the importance of GI tag? जैसे मैंने बताया आपको, preservation of traditional knowledge and traditions. अगर हम सिर्फ बात करते रहे कि गो लोकल है ना, गो लोकल, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, first of all we need to search what is Indian. You people come up with a new ideas in the IPR. ठीक है, आप SSIP और IPRs में रजिस्टर करने के लिए ट्राई करते हो, you come with a new invention. Like मैंने कल एक डस्टर बना लिया जिसमें चौक डस्टर के अंदर ही रहेगा, तो that's my new invention and I want a patent on that. Maybe I will get. But you can also help others by getting geographical indications, and that's why my motive is to educate the students who can be my peer educating team, जो आगे लोगों को मदद कर सके GI registrations के लिए, है ना. Then it gives you the prestige. Linkage with the tourism. If I say linkage with the tourism बढ़ेगा ना तो बहुत सारी चीजें बढ़ती है. There are many types of tourisms which are involved. There is a tourism which is maybe a family based or relaxed tourism, but the other tourism is business tourism, which is very important. So अगर मैंगो खरीदने हम आपके वहाँ आएंगे तो हम मैंगो ही से थोड़ी खरीदेंगे. अगर मैं प्रोफेशनली मैंगो खरीदने आ रही हूँ तो उसके साथ साथ मैं और भी जगह तो जाऊंगी, और भी चीजें भी तो देखूंगी, घूमूंगी. So now I am increasing a tourism, and tourism indirectly is increasing other things around, है ना. Indirectly you are getting economic strengthen, or it gets a spillover the effects, like new businesses can be started because of this. Okay, and the quality can be trusted. Quality can be trusted. If you purchase a brand, what do you mean by brand? You purchase brand because it is a registered brand and you trust that brand. You can go and claim, है ना. मैंने अगर किसी ब्रांड की चीज खरीदी और वो सही नहीं निकली तो मैं जाके क्लेम कर सकती हूँ, पर वही मैंने स्ट्रीट शॉपिंग की है तो मैं जाके कभी क्लेम नहीं कर सकती कि भैया ये अच्छा नहीं था. So that's the difference between when it is a thing is registered and non-registered. So moving further, now who can apply for the geographical indications, है ना. ये बहुत important point. भाई कौन रजिस्टर कर सकता है? इन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. मैं इंडिविजुअल रजिस्टर नहीं कर सकती, पर मैं क्या इंडिविजुअली ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकती हूँ? यस. सो नाउ दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन. अगर मैंने एक ट्रेडमार्क बनवाया है तो मैं रजिस्टर कर सकती हूँ. ट्रेडमार्क मैं कब लूंगी? मैंने एक शॉप शुरू किया है टू सेल मैंगोज. प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने एक दुकान शुरू की मैंगोज बेचने के लिए, जिसका नाम मैंने एस पे से दे दिया. मैंने वो एस को रजिस्टर करवा दिया, है ना. या मैंने उसका नाम दे दिया अरोमा मैंगोज, तो मैं वो अरोमा मैंगोज को ट्रेडमार्क में रजिस्टर कर सकती हूँ. पर जो मैंगोज मैं बेच रही हूँ उसके अंदर, मे बी आई एम सेलिंग दोज मैंगोज, दे आर GI मैंगोज. वो कौन सी होंगी? तो मैं अगर गिर का केसर मंगा रही हूँ तो वो हो गया क्या? गिर केसर. सो आप समझ गए दोनों के बीच में डिफरेंस. वहां रजिस्ट्रेशन मुझे मिल रहा है ट्रेडमार्क का, लेकिन GI रजिस्ट्रेशन किसको मिल रहा है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजेशंस और अथॉरिटीज, and established by and under the law, है ना. Then you have
the applicant must represent the interest of the producers. मेरा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट हमेशा किसका होना चाहिए, कम्युनिटी एट लार्ज का होना चाहिए. मैं पाटन पलरोला अपने नाम से रजिस्टर कर रही हूँ तो मैंने उसका पेटेंट मैंने नहीं इन्वेंट किया है कि न्यू टाइप ऑफ सिल्क किस तरीके से होती है. हाँ, लेकिन अगर मैंने कोई सिल्क वर्म बना लिया नया, ठीक है, जिसको मैंने जेनेटिकली मॉडिफाई किया, जीएम करके, और एक नया वर्म बना लिया, तो मैं उसमें पेटेंट ले सकूँ. पर अभी मैंने कुछ नहीं बनाया है. This is a traditional things which are going since years and years and years. So that for that I can have something which is geographical indication. Application must be in writing, which is very important, in a prescribed format. The application should be addressed to the registrar of geographical indication, and the indication is given for 10 years. Mysore sandal soap देखा है सबने? मैसूर अगरबत्ती देखिए, ये सब जोग्राफिकल इंडिकेशन होल्ड करते हैं मैसूर से. ठीक है, मैसूर पाक सबने खाया है, पर कभी किसी ने इसकी हिस्ट्री देखी है, आया कहाँ से? सो दैट्स बेसिकली जोग्राफिकल इंडिकेशन विच इज गिवन टू अ कम्युनिटी. मैं नहीं क्लेम कर सकती कि मैसूर पाक मैं अच्छा बनाती हूँ. गुजराती में तो मैसूर पाक को तो कुछ और ही समझते हैं. सो दैट्स डिफरेंट स्टोरी. बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग विद मैसूर पाक विच इज काइंड ऑफ स्वीट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Now I'll give you the examples of various geographical indications. First one is Darjeeling tea. Now Darjeeling tea has a status of GI. और please ये Darjeeling tea की जब मैं बात कर रही हूँ, आप you'll be shocked to know this is being exported to the best people in the world. हाँ, the Queen of England has this tea. Okay, so ये Darjeeling tea कोई ऐसा tea नहीं है. It has its origination from the very past. Now Darjeeling tea is different from the Assam tea, from the Kerala tea, from the Karnataka tea. So you have many states which are growing the tea, but Darjeeling tea is different in its aroma, its taste. Okay, it got its first GI and geographical indication. It has the status of even European Union में भी वो रजिस्टर्ड है. मतलब ये ऐसी वैसी चाय नहीं है. आप अगर दार्जिलिंग टी खरीद रहे हैं तो आप वो हम बोलते हैं ना ताज की चाय, वैसी चाय है ये. सो इन इंडिया दार्जिलिंग टी geographical indication is protected under GI. Holders of Darjeeling tea can exclude use of Darjeeling for the tea is not grown in their gardens. Like for example, if someone is growing the tea in Maharashtra under the tag of GI of Darjeeling, possible है. पॉसिबल है. अगर हमने उनसे परमिशन ली है, हम उनको सेम एटमॉस्फेयर में ग्रो करते हैं, हम सेम तरीके से ग्रो करते हैं, तो वो लीगली पॉसिबल है. देन यू हैव the examples, like I'll move to the second example very fast. Kolhapuri chappal. Can we move to the next slide please? The second is Kolhapuri chappal. कहाँ से आई? Every Indian once in a lifetime has worn these chappals. Do you know it is from 12th century that we have this chappal? 12वीं शताब्दी से ये चप्पल है. It was first time that King Bijala actually talked about wearing of this kind of chappals, and इसको geographical indication मिला था. ये एक्सपोर्ट होती है. अभी कहाँ एक्सपोर्ट होती है? तो ये फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती है. ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, एवरीवेयर इट इज अवेलेबल. और ये जोग्राफिकल इंडिकेशन किस जगह के लिए मिला है? नाम इसका कोल्हापुरी चप्पल है. इसकी हिस्ट्री ट्रेस होती है 12वीं शताब्दी से. कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, दीज आर सर्टेन रीजन्स, सतारा डिस्ट्रिक्ट, इसमें बेसिकली these are the places where you can say that geographical indications are given to the Kolhapuri chappals. So you can just imagine 12th century के चप्पल को we got a GI when the actual act came into force and the people of that association गए और उन्होंने register करवाने की कोशिश की. Then you have the next example, a tale of Rasgulla. Somebody was asking me about the tale of Rasgulla, so I always talk about the tale of Rasgulla in this case. There are two states who fight for Rasgulla. Okay, so in the famous explanation, we can say that both the states were fighting for the Rasgulla. According to the historians of Odisha, the Rasgulla originated in Puri. Okay, वो बोलते हैं पुरी में आया as Khira Mohana, and they later evolved into the Pahala Rasgullas. Like it was traditionally offered as bhog to Lakshmi ji at the Jagannath temple. Pehla. But in 2017, when the West Bengal got Rasgulla's GI tag, the Registry Office of India clarified that West Bengal has given the GI status for Bengal Rasgulla, and the Odisha Rasgulla can claim it's from the other origin. So see, जैसे mango, दो नहीं 4 states में मैंगो क्लेम किया है. You have Gujarat, you have Maharashtra, you have UP and Bihar.
So same way, even a rasgulla is something, or even a mithai where you have different states might claim about this mithai being popularly used by their state or made in their state exclusively for a particular purpose. So that can also be said as something which is holding a GI tag, or which can be given a GI tag. Then the next example is for uh, Bikaneri Bhujia and Solapur Chadar. Now, it was the princely state. When I'm talking about princely state, मतलब आज के समय के अमेरिका. Okay, so one of the princely state which was known as बीकानेर, उन्होंने पहली बार बीकानेरी भुजिया बनवाया था in 1877, जब उनके महाराज श्री डूंगर सिंह उन्होंने अपने खानसामे को बोला था कि कुछ ऐसा बनाओ कि जो भुजिया हो. And then it got its GI in 2010. So Bikaneri Bhujia, even Amit ji loves Bikaneri Bhujia. So from this also we can understand that Bikaneri Bhujia is world famous. Okay, so then Solapur Chadar. All of you might have heard about the Solapur Chadar. Do we know the history of Solapur Chadar? Solapur had India's best mills, स्पिनिंग मिल्स, जो ये चादर बनाती थी. पूरे के पूरे घर लगे हुए थे इनको बनाने में, और एक एक घर को हम ये बोल सकते थे कि पेशवास डायनेस्टी के टाइम पे ये बेसिकली था, और एक एक घर जो था वो वीविंग एजेंसी में कन्वर्टेड था. मतलब एक पूरा फैक्ट्री रन होता था, एक इंडस्ट्री था जो वीवर्स इंडस्ट्री माना गया है. सोलापुर चादर obtained its first GI for Maharashtra. Okay, so GI tag was given to सोलापुर चादर. मतलब आप जब भी ये चादर खरीदेंगे तो उस पर लिखा होता है सोलापुर चादर. इसको गुजराती में चौरसा भी बोलते हैं. Okay, so now Gujarati people will say कि भाई ये तो हमारे वहाँ तो उससे भी पहले से है चौरसा. So now you go to search your history, might be कि Solapur people have a different kind of threads being used into it, and you people have a different kind of threads being used into it. तो community can come forward and ask for GI for the same. हाँ, fight होगा, मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई दुख की बात नहीं है. At least you have tried for GI. Then you have the next example. As we are from Gujarat, अगर हमने गुजरात के GI indicators की बात नहीं की तो फिर क्या बात की? So you have Sankeda furniture, which is world famous. If you go to anyone's house, if you find Sankeda furniture, you can very well trace, okay, he is belonging to Gujarat or he has roots from Gujarat. Now this is exported to West of Asia, European countries. This is Sankeda furniture. Usually बच्चों के झूले से इसकी शुरुआत की गई थी in 17th century. It has special kind of wood being used, polished with hand and painted with hand. So this is world famous. Then you have the Kutch embroidery. अब ये Kutch embroidery की भी history है कि Kutch embroidery silk से की जाती है cotton cloth पे. Now this has traveled long back and reached to Gujarat, और इसको अपना GI मिला था 2012 में. So it also has its history. And now comes the next slide, which says about something which is, can you move to the next slide, please? आपके यहाँ भी GI हो सकता है. आपको ध्यान है इस पे GI लिया है किसी ने? So let's get into the history of Junagadh now. ठीक है? I guess people have not asked for the GI for Junagadh. ये आपके यहाँ से है तीनों चीजें. Okay, embroidery and braid work from Junagadh. इसकी history पता है? It is that it is very simple, used with the thread, silk thread. It is done through hands. Okay, many years of practice needs for doing this kind of a work, and the sources say that's a good part of income for the people of Junagadh and nearby areas. So now this is something which has its history from very long back. It was the Rajas who have started this. Then you have the second one, which is fascinating. Woodwork originally belongs to Eastern Africa, where you have the two communities which are residing near the Junagadh or in Junagadh. They are Maldharis and Siddhis. Okay, now these people do this work. Okay, so can they claim GI into this? Yes, पूरी community को अगर आप help करें तो वो शायद इस पे GI ले पाए. Okay, and this is a fascinating work which has its history from Africa. And the third one is the stones, that is sandstone work. आपके यहाँ एक particular type of रेड कलर का पत्थर पाया जाता है जिसपे कार्विंग होती है. I think Bowden College, if I'm not wrong, has the historical building which is being curved in a particular ways. You go and search about the Junagadh history and you will find that it has its Shilpkari and Vastu Shastra. Different dynasties from Junagadh is a very old city.
Like it has Guptas and Mauryas and Mughals and everyone. Then you have the Britishers and Portugal people coming there. So everyone might have left something. Okay, so this is Junagadh into a geographical indication. So can Junagadh people go and claim, or the Siddhis can claim for GI tag? So yes, they can even get a they can try for this. So moving to the next slide, please. What is the economic benefit of this? क्योंकि अब तो हमने ये देख लिया, तो it's important to understand the economic benefit. Definitely, it has some economic benefits. हाई रिटेल प्राइस आप क्लेम कर सकते हैं बिकॉज आपने कुछ ओरिजिनल दिया है, एक्सक्लूसिव दिया है, कंज्यूमर्स के लिए बेटर है, ऑथेंटिक है, क्वालिटी प्रोडक्ट है ना, ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे रिसर्च हुआ है, जिसको गवर्नमेंट की मोहर है कि ये ओरिजिनल है. सो ऑन दैट वे आई विल से इट्स बी लोकल एंड बी वोकल एंड सपोर्ट लोकल. ओके, सो लीगल प्रोटेक्शन मिल रहा है, रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ रही है, आप रूरल लोगों को काम दे रहे हैं, विच इज गेटिंग मोर बेनिफिट्स एंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू द upcoming generations. Okay, so don't leave your roots, try to do something innovative into your roots. If you belong to a farmer family, try to come up with some new ideas into that and try to get some kind of IP help into that. And don't leave agriculture and just shift to some other business because farmers ke paas paise nahi bache. So you are the one who can innovate that. That's why you are studying in a commerce background. You can have this innovation of how to make money, and from money to manipulate money and get more money. Okay, so can we move to the next slide fast? Yes, so these are the 4 benefits which we get from basically it's an enhance of economic growth, and you have this other things around, which is prevents unauthorized use, increases tourism and expands business. And lastly, I will like to point one slide, which is the last slide, please. These are the geographical indications which India has claimed. India up till now holds only 320 geographical indications, which is very less according to me. सिर्फ 320 हम सिर्फ इतना ही नया कर पाए हैं. हमने recently पश्मीना सिल्क और केसर सैफरन उसको geographical indication दिया है. अगर आप देख पा रहे हो तो लेफ्ट में, टोटल लेफ्ट में, you can find a mirror, which is a metal mirror which gets the geographical indications. So thank you very much for inviting me. So on this note, I'm done from my side. If anyone wants to ask anything, please they can. बोलो. हेलो. ओके, बोलो, चालू करो. थैंक यू मैम. There is a famous quote of Swami Vivekananda that knowledge can only be got in one way, the way of experience. There is no other way to know. Here we invite the eminent speakers from the various fields to share their experiences and knowledge. As the aim of the department is to explore the heterogeneous attributes of commerce and management and its recent trends. I am very happy to say that many students and academicians from the field of commerce and management join with us through digital platform in our journey towards knowledge. I show my gratitude towards our Honorable Vice-Chancellor, Professor Dr. Chetan Trivedi sir, who always motivate us to arrange such a wonderful webinars and talks. I show my thankfulness towards our today's eminent speaker, Dr. Ruchi Tiwari,
Associate Professor, Parul Institute of Law, who share her expert knowledge. According to mine, a teacher is powerful when he or she create interest and curiosity for knowledge in students. Thank you, ma'am, for creating interest in such a difficult subject. I also shows my thankfulness towards our head and associate professor, Dr. Bhavsinh Dodia sir, for arranging such a wonderful session. I show my thankfulness towards my colleagues, Mr. Vinit Varma and Dr. Dinesh Kumar at Chavda, for nicely coordinating this Adept Talk. And last but not least, I shows my thankfulness towards all the viewers for being a part of this Adept Talk. Thank you, one and all. Thank you so much. Thank you, whole team, for helping me with the PPTs, because that was a very important part, that every time you help me with that. Thank you so much for inviting me. Thanks a lot. Thank you.